सोच में सकारात्मकता लाएं, जीवन को बेहतर बनाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 844-844-0632। नंबर एक बार फिर सुने 844-844-0632। Namaskar, I'm Harpreet Kaur and I welcome you all to our live and interactive session, Sahyog. Sahyog sessions are held under the beautiful initiative of Ministry of Education as a part of Atmanirbhar Bharat Abhiyan for providing psychosocial support to parents, teachers and students across the country. The topic that we have taken up in today's edition of Sahyog is Breaking the Silence, Supporting Mental Health in Schools. You are watching this session on PME Vidya channels 6 to 12 and also on our YouTube handle NCERT Official. If you want to talk about the subject, which is all about breaking the silence, if you have your experiences, your feedback or any questions that you would like to ask the experts, you can definitely give us a call. We have two phone numbers for you. Let me tell you the PME Vidya IBRS number first. It is 8800440559. We also have a Manodarpan National Tele Helpline number for you. This is 844-844-0632. Apart from that, we also have a dedicated email ID, that is sahyog.ncert@cit.nic.in. And lastly, you can always send us your questions on our YouTube handle NCERT Official. और आज जो ये टॉपिक हमने बहुत ध्यान से चुना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को ब्रेक करें। अक्सर बच्चे पेयर प्रेशर में आके या किसी और वजह से अपने मन की बात नहीं रख पाते हैं, दैट एड्स टू देयर ट्रॉमा। सो क्या होता है साइलेंस, कैसे ये मेंटल हेल्थ से जुड़ा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन पर हम बात करेंगे। हम ऐसे भी बात करेंगे कैसे एक सेफ एनवायरनमेंट दिया जा सके स्टूडेंट्स को, ताकि वो वल्नरेबल हो सके और अपने मन की बात कह सके। और इसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, हमारे गेस्ट। जी हाँ, चलिए आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। वी आर जॉइंड बाय मिसेस सबिता मिश्रा। मैम इज अ प्रैक्टिसिंग काउंसलर। मैम नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू द सेशन। नमस्कार जी, थैंक यू। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजकुमार। ही इज असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम RIENCERT भुवनेश्वर। सर नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच। जी, और हम सबका साथ देंगी हमारी इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर मिस अनुष्का शर्मा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम क्यों ना टॉपिक से ही शुरुआत करें, समझने की कोशिश करते हैं कि जिस साइलेंस की हम बात कर रहे हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकिंग द साइलेंस सपोर्टिंग मेंटल हेल्थ इन स्कूल्स, ये साइलेंस क्या है, इसे कैसे डिफाइन हम कर सकते हैं और स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में इसकी डेफिनेशन क्या है। सो राजकुमार सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम किस तरह के साइलेंस की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चों को साइलेंट होने पर मजबूर करती है और क्या इसका असर रहता है उनकी मेंटल हेल्थ पर, प्लीज़ इसके बारे में बताएं। जी मैम, जब हम साइलेंस की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक इस टॉपिक में जब हम साइलेंस की बात कर रहे हैं, तो साइलेंस एक अलग प्रकार का साइलेंस है जिसमें बच्चे जो है प्रेशर में आके चुप्पी साध लेते हैं। जब उनके पास कोई सल्यूशन नहीं रहता है, उसका कोई हम ये कह सकते हैं कि उनके पास कोई सल्यूशन किसी प्रॉब्लम का नहीं रहता है, तो वो अपने आप को एक साइलेंट मोड पे कर लेते हैं। और ये साइलेंट मोड पे आने का क्या कारण है, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे एकेडमिक प्रेशर बच्चों पे हद से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि एकेडमिक प्रेशर जब हो जाए, या एकेडमिक के साथ साथ उन्हें एक्स्ट्रा जो है ट्यूशन वर्क पेरेंट्स कई बार देते हैं, उसका प्रेशर साथ में है, या फिर हो सकता है कि कुछ डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ उनके साथ हो रही हो। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं बुलिंग की या मिसबिहेव बाय पीयर ग्रुप्स। बहुत सारे ऐसे केसेस रहते हैं जिसमें बच्चों पर कई तरीके से मिसबिहेव किया जाता है। जैसे
हम ये सोच सकते हैं उनके साथ या जेंडर बेस पे या कोई डिसेबल्ड बच्चा है उसके साथ उसके डिसेबिलिटी को लेके उस पर बुलिंग किया जाए, तो वो क्या क्या करता है बच्चा उस टाइम कि उसके ऊपर प्रेशर आता है, मेंटल प्रेशर आता है और उसकी मेंटल हेल्थ को पूरी तरह से वो इफेक्ट करता है। और जब उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं रहता तो वो साइलेंस मोड पे चला जाता है। इसमें और भी कई प्रकार की बातें हैं, जैसे सक्सेस होने का एक बच्चे के अंदर स्ट्रेस फॉर ट्राइंग टू सक्सीड। अगर सक्सेस कैसे होना है, क्योंकि बच्चे के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है, पेरेंट्स का है चाहे टीचर्स का है, अलग टाइप का प्रेशर उनके ऊपर रहता है कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, इस टाइप के प्रेशर उनके ऊपर आते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की हम बात करते हैं। कोई बच्चा क्लास में बहुत इंटेलिजेंट है और कोई थोड़ा स्लो लर्नर है। कई बार टीचर जो है बच्चे का बच्चे के साथ कंपैरिजन करता है, जो भी बच्चे की मेंटल हेल्थ पे बैड इफेक्ट करता है, क्योंकि सभी एक जैसे नहीं होते। जो मैंने पहले भी कहा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस उनमें रहता है और सभी का गेन करने का अपना अपना तरीका रहता है। कई बच्चे थोड़ा टाइम लेके गेन करते हैं, कोई एकदम किसी कंसेप्ट को गेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब बच्चे के पास ओवरबर्डन हो जाता है तो वो साइलेंस मोड में चला जाता है। इसमें कुछ और बातें, जैसे मैं यहाँ पे कहूँ तो पेरेंट्स कई बार जो है अपने बच्चे का अपने किसी रिलेटिव के बच्चे के साथ क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए हमारे उस रिलेटिव का बच्चा जो है वो इतने मार्क्स ला रहा है, चाहे मार्क्स की बात हो चाहे जॉब की बात हो, वो भी कई बार बच्चे को साइलेंट मोड पे ले जाते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना लेवल होता है और वो अलग अलग तरीके से लोग जो है वो चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ, कई बार बच्चे के ऊपर हद से ज़्यादा जब परेशानियाँ आ जाती हैं तो वो उस चीज़ को, उसे लगता है कि अब मुझे सुनने वाला कोई नहीं है या मेरा जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है, तो वो साइलेंट मोड पे चले जाते हैं। और साइलेंट मोड पे अगर बच्चा चला जाता है तो वो उसके मेंटल हेल्थ को पूरी तरह से इफेक्ट करता है। उसके बाद उसके कई बुरे परिणाम भी कई बार होते हैं। हम हमेशा मीडिया के थ्रू देखते हैं, जब मेंटल हेल्थ बच्चे की ठीक नहीं होगी तो कई प्रकार की प्रॉब्लम्स जो है पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों के लिए वो आती हैं। मैम सर, आपने बहुत सारे रीजंस गिनवाए कि बच्चा आखिरकार साइलेंट मोड पर क्यों जा रहा है। एकेडमिक प्रेशर हो सकता है, बुलिंग हो सकती है, हरासमेंट हो सकती है, या फिर उसके किसी भी तरीके से उसको इन्फीरियर फील कराया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं और आज इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि साइलेंट मोड पर वो ना जाए, अपने मन की बात कहे, और मन की बात कह पाने के लिए वो इन्वायरमेंट उसे प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर वो सेफ़ एंड सिक्योर फील करे। तो सबिता मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी अबाउट some effective ways where we can create this safe environment for the students where they can be comfortable in sharing what is there in their hearts. They can be vulnerable, they can open up to teachers, parents and counselors without having the fear of judgment. तो ऐसे कौन कौन से माध्यम हैं, कौन कौन से तरीके हैं, प्लीज बताएं। Thank you, ma'am, for the question. Actually, it is a pleasure to be a part of this important discussion today. And as educators, all of us know that whenever a child comes to school, a child does not come only for the academic excellence. A child comes to school for the holistic development. Right. That is the physical and mental health of the students. So physical and mental health are equal important for a student, equally important, and physical and mental health both are interrelated. So mental health includes the mental well-being of the student in psychological, emotional, intellectual, in some cases spiritual also, and social well-being of the child. So whenever we talk about mental health, how the school plays an important role in creating a safe and supportive environment for mental health. Right. So here we can discuss some points where we can create a safe and supportive environment for a student who is who should be mentally whose mental health should be properly grown. Right. Then first one is establish trust and rapport. There should be a positive teacher-student relationship. The counselor, the teachers, the staff members which are in the school, there should be a positive rapport and trust among the students and the teachers, so that the teacher should be empathetic, non-judgmental, and there should be a positive relationship among them.
how to promote openness. As Sir has told, how to break the silence. So the promote open awareness campaign should be there. More amount of workshops, more number of workshops, more number of events should be created, so that the normalize mental health discussions through awareness campaign and workshop and events, and so that the students can be encouraged to share their experiences, to share their feelings, so that they are for their mental well-being. And thirdly, we can ensure confidentiality. We should establish clear guidelines for confidentiality and privacy. जी. And we should designate trusted staff members who are trustworthy, trusted staff members or counselors to handle the sensitive issues and sensitive informations. Then reduce stigma, which is the most important in my view. Inclusive languages and should be used, and labeling or stereotyping should be avoided. So this will encourage students to view mental health as a natural part of mental well-being. Then accessible resources. Whenever the child requires help, he should get it, or one should get it. So the counseling, for that we should offer counseling services, and online help and support groups should be accessible, and we should be clear. The children should get clear information on and where to seek help, and ensure students should know that where they will turn for help. Then involve parents and guardians. All of us know students are a product of both home and school. So whenever we are conducting any activities or anything, keep parents informed about the mental health initiative and what are the resources, what steps we are taking. The parents and guardians should be involved in that. And parents should be encouraged to support the mental health of the students. Then safe physical space. Create a safe physical space always which is quiet, and in which we can do private discussion areas. Private discussion, and the areas should be quiet and for the discussion, concerned discussion. And the school environment should be inclusive as well as welcoming. The students should feel should feel safe in that environment. Monitor and evaluation is very much important. So whatever we are doing, train students. We should monitor the systems. Whatever we are doing, this should be regularly done, and so that the evaluation which we are doing, we can collect feedback from the students, from the teachers, from the parents, and from the teachers and counselors. Regular feedback is necessary. Then foster growth mindset. In that, we should emphasize a self-care journey. The students should be encouraged to have a self-care journey. They should be self-care is the priority for foster growth mindset, and they should get the idea that it's always okay to ask for help. Don't hesitate to ask for the help, and like this they can break the silence, and we can create a safe and supportive environment and in schools. Right, these are some of the very important strategies that you have mentioned here, and by taking care of all these aspects, we can make sure that we are providing safe and conducive environment to the students who are opening up, as far as their problems are concerned, and who are also getting vulnerable because they know that they have people around them whom they can trust. लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी strategies हो सकती हैं जिनके ज़रिए बच्चे खुद को अपने मतलब और अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो डॉक्टर राजकुमार, आप कुछ और ऐसी strategies के बारे में बात करना चाहेंगे? जी मैम, यहाँ पे मुझे जो अकॉर्डिंग टू मी जो मुझे लगता है, करिकुलम
जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो करिकुलम अकॉर्डिंग टू एज, जो अभी एनसीईआरटी पूरे जोर से जो किताबों का काम चल रहा है, जो किताबें बन रही हैं, वो एनसीएफ एससी 2023 या एनसीएफ एफएस जो फाउंडेशन स्टेज का एनसीएफ है या स्कूल एजुकेशन का एनसीएफ है, उसके अकॉर्डिंग जो बुक्स नहीं बन रही है उसमें मटेरियल को उस हिसाब से डाला जा रहा है कि बच्चों की एज के साथ वो अप्रोप्रिएट हो, उनका ओवरबर्डन ना हो। या दूसरा यहाँ पे एक और बात है, पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट, स्कूल का क्लाइमेट ऐसा ना हो कि बच्चे के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो। ये स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करना पड़ेगा कि किसी भी बच्चे के साथ किसी भी बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। या फिर रोल ऑफ स्कूल में जब हम बात करते हैं तो बच्चों को कई बार ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं या दिए जाने चाहिए जो जिसमें बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के साथ कम से कम डेली 30 से 40 मिनट जो है अपने बच्चे के साथ पेरेंट्स बिता पाए। क्योंकि जो आजकल जब हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, पहले वाला वो सिस्टम नहीं है कि जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम नहीं है, और बच्चे जो है अपने पेरेंट्स जहाँ पे दोनों बोथ पेरेंट्स जो है वो जॉब में हैं, तो वो अपने बच्चों के साथ बहुत कम जो है वो टाइम स्पेंड कर पाते हैं। तो स्कूल को ऐसा प्रोजेक्ट देना चाहिए जिसमें कम से कम बच्चे के साथ पेरेंट्स जो है कुछ टाइम जो है साथ बिता पाए। और जब मैं जॉइंट फैमिली जो पहले हुआ करती थी उसमें बच्चा अपना अगर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसी दिक्कत उनको है तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाते थे। लेकिन अभी सिचुएशन वैसी नहीं है, थोड़ी सी सिचुएशन बदली है। और यहाँ पे सेलिब्रेशन ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स इन स्कूल्स की जब हम बात करते हैं तो स्कूल में बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिसमें मदर्स डे जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। जैसे मदर्स डे अगर स्कूल कोई सेलिब्रेट कर रहा है तो बच्चों के पेरेंट्स को, स्पेसिफिक मदर्स को वहाँ पर बुलाया जाए और उनके साथ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेरेंट्स के साथ घुल मिल पाए। ये बातें सभी के लिए अप्लाई नहीं होगी, कुछ लोगों के लिए जहाँ पे पेरेंट्स जो है बच्चों को बहुत कम समय दे पाते हैं, तो ऐसे कुछ सेलिब्रेशन जो है वो किए जा सकते हैं। या गेस्ट स्पीकर को बुला के स्कूल में जो डिफरेंट टॉपिक्स पे स्पीकर जो है अपनी बात रख सकते हैं, जिससे बच्चे जो है मोटिवेट हों और उनका मेंटल हेल्थ पे अगर कहीं पे कोई असर आ रहा है तो कम से कम वो पॉजिटिव वे पे जा पाएँ। और ऐसा क्लाइमेट मुझे लगता है बनना चाहिए पेरेंट्स के साथ बच्चे का और टीचर्स के साथ बच्चे का, जिसमें डर ना हो, जिसमें फेयर नाम की कोई चीज़ ना हो। बच्चे जो हैं वो अपनी बात चाहे वो पेरेंट्स से चाहे वो टीचर से खुल के अपना शेयर कर पाए। क्योंकि जब तक डर वाला माहौल होगा तब तक ना ही बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स से बात कर पाएंगे, और अगर जब वो अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो साइलेंस की तरफ जाएंगे, जो बहुत ही खराब हो सकता है। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया। मैं खुद भी इसमें बिलीव करती हूँ कि जो कमी न्यूक्लियर फैमिलीज को देखनी पड़ रही है वो सबसे बड़ा कारण बनती है कि बच्चे अपने आप में सिमट कर रह जाते हैं और अपनी बात खुलकर नहीं कर पाते। बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बैठकर टाइम स्पेंड करें, क्योंकि आज हम बात करते हैं न्यूरो पेरेंटिंग की भी, कि बच्चे कैसे कैसे कौन से माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हैं, कहाँ वो शांत हो रहे हैं, ये सब पेरेंट्स को देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ सबिता मैम, वी आर लेफ्ट विद few last minutes for the session, so I want to ask you one very relevant question, that how do you think that schools can balance academic pressures with the need to support students' mental health and well-being? Because they have to, teachers of course, they have to complete the curriculum also, they do not have enough time to spend with the students, sit with them and observe them. So कैसे इन दोनों चीज़ों को maintain किया जा सकता है, and it's a win-win situation for both? Thank you, ma'am, for the question. And here I would like to emphasize some points in which we can have some points by which balancing academic pressure and integrating mental health will be balanced. And first one is balancing, how to balance academic pressure. First one, prioritize students' well-being. Always recognize that mental health is equally important as academic achievements. So flexible scheduling and deadlines, allow for breaks. There should be flexible deadlines. We should not be very rigid to the deadlines, and the workload should be manageable, so that there will be flexible scheduling. And academic support, as Sir told, sometimes we should provide resources for students, those who are struggling academically. Okay. Such as tutoring and mentoring. We should provide them academic support, and children should get it at their reach.
and promote self-care and break. That is nowadays very, very important. Promote self-reducing, stress-reducing activities. So self-care is very much essential, such as regular breathing exercise, such as mindfulness or yoga, pranayam, etc. They can encourage self-care by these activities. Okay. And breaks is also very much essential. Reasonable workload. They will ensure assignments and exams are reasonable and don't overwhelm students by this the workload which they cannot bear. That's right. Then what is role of mental health education in this? We can integrate curriculum integration. We can integrate curriculum with explicit lessons. So we should incorporate mental health topics into existing topics such as health class or life skills. We can include these topics. Okay. And we can, as already mentioned, we should guest speakers should be invited to share their experience and expertise with the students, and workshops and events should be done continuously, so that we can, by organizing events, we can promote mental health awareness, stress reduction and self-care. And open discussion, by breaking the silence, encourage open conversation about mental health, and so that it will reduce stigma. And what are the benefits here? It will increase awareness. Students will understand mental health concept properly. They can identify signs of struggle. Okay. And by this improving coping skills, students will learn effective strategies to manage stress and emotions. And trained teachers should be there, and parent involvement is very much essential. Yes. And regular evaluation and support resources are also needed to create a positive mental health among the students. And parental involvement, you should keep parent informed and involved in mental health activities. By these points, we can balance the academic pressure and mental health of the students. That's right, and thereby we can have an excellent coordination between parents and students, parents and teachers and students, because these are some of the really effective points that if we follow them religiously, we won't be having any problem when it comes to breaking the silence of the students. And for this extremely wonderful discussion, I must thank both my experts. Today in Sahyog session, we talked about breaking the silence, supporting mental health in schools. Dr. Rajkumar, Mrs. Sabita Mishra, thank you so much for your wonderful contribution to the session. Thank you, it was ma'am. indeed a pleasure. Thank you. Thank you so much. Right. And I would also like to thank my ISL interpreter, Miss Anushka, for her contribution to the session. Thank you so much. Now it's time for me to wind up this session, Sahyog, but we are not ending our day as yet, because there is another program that we have lined up for you. So before we go to the schedule, let me tell you the textbooks for grade 4 and 7 are available now. Please collect them, purchase them from Amazon, Flipkart or NCERT website. And now take a look at the program schedule. So in a short while from now, you can watch our session on school leadership development by NCSL NEPA. Rest of the discussions have already taken place and you can watch them on our YouTube handle NCERT Official. With this, it's a wrap. This is me, Harpreet Kaur, taking leave of you. Namaskar.